Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis session for 15th of November. So when we look at deflation, so Pravesh, can you just explain what do we mean by deflation? Mansi, it is the vice versa of deflation. In inflation, we have महंगाई, and in deflation, we have mandi in the economy. नहीं So नहीं, basically, not in it is the opposite. थोड़ा और अच्छे से मतलब प्रॉपर डिफाइन करो कि अगर आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे तो मेरे को नहीं समझ में आएगा जो अभी आपने टर्म्स यूज करे. ठीक है. So deflation is basically the slowdown in the economy when there is limited employment opportunities. There is limited scale of growth in the economy. So that shows that the deflation. नो डिफ्लेशन का मतलब जैसे आपने एक लाइन जो बोली एप्रोप्रिएट जो थी पूरे इसमें दैट वाज ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है एंड देर इज वन मोर टर्म डिसइन्फ्लेशन. तो डिफ्लेशन जो है वी कैन से कि नेगेटिव इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइसेस आर नॉट राइजिंग बट इन केस ऑफ डिसइन्फ्लेशन इन्फ्लेशन हो रहा है बट जो इंटेंसिटी है या जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम है कंपेयर टू इन्फ्लेशन. सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन में टर्म इन्फ्लेशन है तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइसेस आर स्टिल इंक्रीजिंग बट जितने अमाउंट से वो इंक्रीज हो रहे हैं वो कम हो गया इन केस ऑफ डिसइन्फ्लेशन. डिफ्लेशन में मतलब प्राइसेस आर नॉट इंक्रीजिंग, नेगेटिव इन्फ्लेशन है, प्राइसेस फॉल हो रहे हैं. जैसे कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो जो होलसेल प्राइसेस हैं दे आर इन डिफ्लेशन जोन, नेगेटिव टेरिटरी में आप देख सकते हो, जीरो से नीचे ग्राफ है मतलब कि प्राइसेस फॉल हो रहे हैं. तो ये क्लियर डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स के बीच में. Thank you, Mansi. ओके देन so Israel army says that it has seized the Hamas parliament in Gaza. So after the airstrikes, we saw that on the land also basically the Israeli army it intruded into the Gaza Strip. So land attacks bhi kiye gaye hain and they have finally captured the Gaza's parliament. So basically this is we are not seeing right now the situation moving towards any kind of solution or resolution. Things are only escalating further. So इसकी वजह से things एक ये possibility भी हो सकती है कि इजराइल ने since हमास का पार्लियामेंट कैप्चर कर लिया तो जिस तरीके से थिंग्स वेंट ऑन इन द वेस्ट बैंक उस तरीके से अब वो गाजा स्ट्रिप में भी हो सकते हैं. So we saw 39 Myanmar soldiers. They entered the Mizoram and they've been sent back again. So since we are having the free movement regime with Myanmar, to border areas में basically जो local community है या जो civilians हैं they can move across the border without having any kind of visa services. तो वो सब नहीं required होता है for their again livelihood opportunities. And since वो उस region में they have been living for many years, so because they also have similarity in terms of their culture and traditions also, so that is also one of the factors that has been provided. Yeah, that is why we are having the free movement regime. But उसकी वजह से कुछ security concerns भी देखे गए हैं. Firstly we saw कि इसकी वजह से because of the free movement regime it has been misused for the drug trade, illegal drug smuggling. We yesterday also we talked about the golden triangle. So 3 countries are a part of it. So आंचल आप बता सकते हो golden triangle की कौन सी 3 countries they together constitute golden triangle? आंचल ओके प्रवेश आप बता दो. Am I audible? Yes, now audible. Okay, so I was asking you आंचल golden triangle में कौन सी 3 countries हैं? Golden Triangle
आप किस मतलब उस पे पूछ रहे हो? आपसे मैं बता देता हूँ। ड्रग स्मगलिंग के लिए आंचल को ट्राई करने दो, कोई नहीं, पहले आंचल बता ओके, देगी, उसके बाद आप बता सकते हो इफ शी इज नॉट एबल टू एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द कंट्री। ड्रग स्मगलिंग में आई वाज टॉकिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फ्री मूवमेंट रिजीम है, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं बिकॉज ऑफ जो पहले मैंने रीजंस बताए कि व्हाई वी हैव द फ्री मूवमेंट रिजीम। तो ड्रग ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करते हैं। अफगानिस्तान एक तो हो अफगानिस्तान सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहाँ से आ गया? अच्छा नो, तो मेरे को ऑडिबल नहीं था, तो मुझे नहीं पता ये टॉपिक आप किस रिगार्ड में पूछ रहे हो तो। ठीक है, ठीक है, मैं बता प्रवेश देता आप हूँ बताओ। आंसर। थ्री कंट्रीज आर इन आवर नेबरहुड, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर इन्वॉल्व इन दिस इलीगल ड्रग ट्रेड। एंड एक और जो प्रॉब्लम अभी हमने देखा कि म्यांमार सोल्जर्स दे ऑल्सो एंटर्ड, सो इवन म्यांमार में भी सीन की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो this time we saw that Indian Defense Authorities, the soldiers of Myanmar military who had taken refuge in Mizoram after their camps, they were overrun by the ethnic armed groups which were aligned with the pro-democracy movement in the Myanmar. So with this, we also see, the refugees also entering into India. Although India is not a signatory to the UN Convention on Refugees, but still we take that humanitarian approach. And it is not that we are, using coercive measures to push them back, or we're not trying to provide them basic services also. So that has been how India has responded to, even during 1971 war with the Bangladesh also. Then also we had this huge crisis in terms of a large number of refugees entering into India. So even then also we took that humanitarian approach, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। एंड उस टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी, दैट ऑल्सो वी हैड टू बेसिकली मैनेज दैट एज वेल। So the fighting basically, it saw about 1,500 Myanmar nationals taking refuge in the border areas of Mizoram. And plus northeastern states में भी we are seeing the insurgency problem, तो वो भी कहीं ना कहीं देखी जाती है कि it is also fueled up by these, the people living across the border in Myanmar also. So वहां से भी जो non-state actors आप बोल सकते हो, they also misuse that kind of situation in the northeast India. So when we talk about these smoke guns, anti-smoke guns, so basically they are using obviously water वो use कर रहे हैं. So since we are also talking about, water management, or we are going through water scarcity. So Pravesh and Oshik, what do you think? Is it efficient utilization of water, or like how do you support, or what are your arguments for this kind of administrative measures to tackle pollution? कौशिक आप बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। Okay, okay. So Oshik, I think, is not available. So Mansi, I think that this is an immediate measure which is usually taken by the governments to to curb the air pollution. So this is not, obviously, I subscribe with your view that this is not a long and sustainable way out to deal with the air pollution problem. But yes, on the immediate basis, this do helps. And obviously, when we see the concept of cloud shading and artificial rain, so it is the similar concept but on a limited scale. So this is an immediate measure, I would say. So utilization तो है इसका. तो आई वुड से कि अगेन जैसा आपने बोला शॉर्ट टर्म मेजर है, बट शॉर्ट टर्म मेजर में भी बिकॉज वी सी की जो रीच है, स्मोक गन्स कहाँ तक इस वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो हाई रीच तो है नहीं उसकी, तो बहुत ही लिमिटेड एरिया तक वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, और वो भी आई थिंक फ्यू मिनट्स तक ही हमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि देन जो पोल्यूटेंट्स है वो फिर दे विल अगेन डिसेंड डाउन टू द ग्राउंड लेवल। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट दिस मेजर इट इज नॉट दैट इफेक्टिव, या थोड़ा सा भी मिनिस्कल जो इम्पैक्ट हो रहा है। पर साथ के साथ जो मैंने कंसर्न रेज किया कि वी आर यूजिंग वाटर इन दिस, सो
आई डोंट थिंक सो कि दिस शुड बी डन, क्योंकि कितने नंबर ऑफ आप स्मोक गन्स, एंटी स्मोक गन्स यूज कर रहे हो उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, बट मेन प्रॉब्लम हाँ इज तो इसका एक मैं इसमें बोलूंगा, इसका ना एक मैकेनिज्म होता है। तो बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी स्मोक गन यूज करते हैं, सबसे पहले जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो एरियाज को हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट सरकार को भेजती है कि ये पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर पोल्यूशन की इंटेंसिटी ज्यादा है। उसमें AIQ का भी, सफर का भी, सारे स्टैंडर्ड्स लेके और वो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है। और उसके बाद जो एंटी स्मोक गन्स होती हैं वो उन हॉटस्पॉट रीजन्स के लिए अलॉट होती है, ये हर जगह नहीं घूमती है। जैसे कि अगर आप देखोगे CP, so CP is considered as a very prominent area because of high density of the population, commercial market है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल भी वहाँ पे ज्यादा जनरेट होता है बिकॉज ऑफ व्हीकलर एमिशन। तो इस वजह से वो एक हॉटस्पॉट है। तो सारी चीजों को ध्यान रख के इस तरीके से ये स्मोक ट्रक्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। हर जगह नहीं करते हैं, तो लेकिन जो ज्यादा डेंसिटी होती है वहां करते हैं। तो एज पर दी वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या, मैकेनिज्म रीजन। हाँ मतलब मेरा पॉइंट यही है कि वहां पे भी जहाँ पे हॉटस्पॉट्स है वहां पे भी इतना इम्पैक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो ये पोल्यूशन को आप डिसेंड कर दोगे जहां तक इनकी रीच है, बट उसके बाद थोड़े आफ्टर फ्यू मिनट्स ओनली जो पोल्यूटेंट्स है दे विल अगेन डिसेंड डाउन टू द हाँ ग्राउंड। मतलब वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म मेजर है तो इसके ऊपर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। Mansi, you can take up Bharat Mandapam. Okay, Bharat Mandapam's maiden trade fair hosts 3,500 exhibitors. So we are seeing international trade fair यहाँ पे it is being hosted in Bharat Mandapam. So this is one of the measures of promoting the artisans, our handicrafts. So the theme is basically it is the Vasudev Kutumbakam United by Trade. So 13 countries ke representatives, these are the countries who will be participating in the fair. So it is not just limited to Indian, promotion of Indian artifacts, but international countries ki bhi yahan pe their people are also present over here. So even that is also promoted. So basically we can And again yes, इसको बड़े स्केल पे करने के लिए we can also look in for कि कैसे हम इनको export भी कर सकते हैं with these countries. yes. First of all, this can be part of the India's soft diplomacy. ये हो सकता है. Second would be to present India's culture and tradition at a very larger level in the world, for the world. तो भारत मंडपम जो एक इम्पोर्टेंट एरिया है वहाँ पर ट्राइबल आर्ट, फोक आर्ट, ट्रेडिशन एक्सेट्रा इनका भी पोर्ट्रे होता है और बाकी लोग के सामने भी प्रस्तुत किया जाएगा. तो बेसिकली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. लिख सकते हैं इसको. कौशिक, हाँ, which government agency constructed the Bharat Mandapam? आप बोल दीजिए. CPWD, Union Government, Ministry of Urban Planning. Yes. So High Court has to say when we talk about the menace of stray dogs, तो पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को compensate करना चाहिए victims of the dog bites. So in this regard, we have talked about as a solution measures like we need to control the population of stray dogs. So we can go for sterilization also, and here the role of municipality becomes very important. So and again rabies के बारे में जब हम बात करते हैं तो even the vaccines also should be given to these stray dogs. So court has recommended rupees 10,000 per tooth mark with increase in compensation when flesh is removed from the skin. But again this is after the dog bite, so हमें focus करना चाहिए how we can prevent them. So compensation एक short term kind of relief हो गया, मानसी, ultimate जो ये तो problem स्ट्रे that डॉग की बात कर रहे is हैं, लेकिन क्या अगर पेट डॉग अगर काट लेता है किसी को तो उसके ऊपर कुछ है हमारे यहाँ प्रावधान? सेम चीज़ है नहीं देव. वो भी नहीं है, हाँ एनी सेम डॉग है उस चीज देव. में भी होना चाहिए, वो तो सेम होना चाहिए वो है तो। वैसे ही है उसका. सेम चीज़ है इसका. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इट कैन बी लीड टू मैनिपुलेशन कि 10,000 रुपीज पर टूथ मार्क. तो आई थिंक 10,000 इट इज वेरी लार्ज अमाउंट per tooth mark. Rather than giving compensation, the government should promote vaccination and sterilization program for controlling the population of the stray dog. It is much अगर ये मतलब better मेन cost effective प्रॉब्लम है solution. वी नीड टू हाँ फोकस अपॉन प्रिवेंशन ऑफ दैट मेन प्रॉब्लम, उसको हम कॉज को कैसे रोक सकते हैं।
So Odisha readies the draft of the PESA Act rules, and it is obviously suggestions of the people would be an important part of it. So PESA is the Panchayat extension to the Scheduled Areas 1996 Act जो है. So Odisha came up with a draft of this for the Odisha Gram Panchayat Extension Schedule rules. So this is basically applicable in case of जहाँ पे scheduled areas है, जो Schedule 5 and Schedule 6 की हम बात करते हैं, which is part of the Constitution. And so PESA Act एक central act है, rules should have been framed by the union government also. So एक ये point of view भी है. So basically ग्राम सभा का क्या role होगा? What would be their powers? This is one of the most important aspect of the PESA Act. मतलब उसी के लिए है कि properly we power devolution की जब हम बात करते हैं local level पे scheduled areas में. So this is in the context of land acquisition के लिए क्या process follow किया जाएगा, say of the local community कितना matter करेगी and उनका कितना weightage रहेगा in terms of coming to the final conclusion. या suppose कोई developmental project आता है, private companies होती है, be it for mining purposes. So उस चीज में जो local community का say है, that is important उनका land acquisition के case में, because again compensation their rehabilitation वो सब important aspect हैं. So this needs to be done in a balanced manner. So इस context में we have this PESA Act and minor minerals के लिए that is another aspect, granting of prospecting license, meaning like a mining license जो I was just mentioning, control over intoxicants, and then prevention of alienation of land in the scheduled areas and control over the markets also. So this needs to be done in a fair, just, एक transparent manner में सारी चीजें होनी चाहिए. It should be again transparency होनी चाहिए between the local community, the citizens, and whatever is again जो step है, या it can be between government, administration, or even the private sector also. So Prime Minister is on a visit to Jharkhand state on the eve of tribal icon Birsa Munda's birth anniversary. So this also happens to be on the same day of Jharkhand's statehood day. So Oshik, if you can mention about important contributions of Birsa Munda. Basically, the Birsa Munda led the Munda's revolt in 1899, and he was against the capture of the land by the Dikus. Dikus is basically a foreigners who were trying to use up the lands of the tribals in the Jharkhand region, Chotanagpur region, and he was against both the Jamindars, landlord, moneylender, as well as the Britishers. So he talked about the Birshite religion, back to the past, golden past, etc. And he motivated the people around him His to movement revolt or against the revolt government. was revivalist or reformist? Revivalist. Basically, the revolt was revivalist ठीक है. because he talked about the Birsite religion. That's why. As you mentioned, golden past revival. Birsa Raj. So when we talk about a Norwegian perspective, क्या है इंडिया की जो digital journey रही है. So leaving no one behind, this is a powerful but challenging promise that United Nations member states they have pledged to work towards in pursuit of 2030 SDGs. So
this is a general start to this. India has discovered some of the ways to move closer to this promise. अगर हम इंडिया की performance की बात करें on SDG, so comparatively when we compare it with other countries, so India is more on track to achieve these SDG goals in few areas. So one of the most powerful tools इंडिया की जो जर्नी में रहा है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसको हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं. So this includes like examples like Jam Trinity हो गया, and when we talk about the UPI infrastructure, जो UPI network है, National Payments Corporation, they it is approved by them जो payments होती हैं. So UPI, Bharat Pay, all of these have basically how it has increased स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक. तो यूजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. डिजिटल आईडीज हम आज के टाइम में इतना ज़्यादा क्रिएट करने की बात करते हैं, लाइक ऑलरेडी वी हैव आधार आईडीज. देन वी टॉक अबाउट क्रिएटिंग ए नेशनल डिजिटल हेल्थ आईडी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट आईडी होनी चाहिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. तो सेफ्टी ऑफ डेटा, पर्सनल डेटा को आप कैसे सेफ रखोगे, प्लस हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट इट्स misuse ना हो वो for specifically political reasons, so that shouldn't get manipulated. So that is important. जो हमारी digital journey रही है, how it has improved in financial inclusion, how direct benefit transfers की हम बात करते हैं, तो financial inclusion बहुत larger scale पे we have seen success in that. And apart from this, when we also talk about delivering the benefits to the beneficiaries of the schemes directly into their bank accounts. So even in that also how we have improved upon increasing the efficiency of benefits delivery to the beneficiaries. So that has been happened because of, again, the digital payments or the digital infrastructure that we have worked upon. And the modern technologies in case of, तो ये हो गया था थोड़ा public sector का. And when we talk about private sector, so औशक आप mention कर सकते हो private sector में कौन सी ऐसी digital technologies हैं जो अभी we can say कि they are more thriving, या we are seeing they are more in developmental stages, we are trying to adopt more of them. Basically, in the private sector, Map My India is one of the growing startup which has tried to map all over India, and it is currently in competition with the Google Maps. So it has various provisions such as rural areas digital mapping, तो उसका हो सकता है. Second would be the UPI, Paytm, etc. That is a digital part of the private sector. हाँ, मतलब और टेक्नोलॉजी के फॉर्म में मैं एग्जांपल्स पूछ रही थी, और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. लाइक वी हैव Apart from आर्टिफिशियल UPI, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जिसको हम डीप टेक भी बोलते हैं. So these are some other technological advancements that can see in the private sector. And obviously slowly we are seeing its expansion even in the public sector also, like cloud computing के context में when you talk about management of the data. So Norwegian perspective की हम बात कर रहे थे, तो they are having this 50 in 5 campaign. So we are seeing कि Norwegian countries जो है Norway, they have long history of supporting the digital public goods. So in good governance के perspective से भी these digital technologies and services, they play important role. So United Nations का development program भी है. And so I'm just looking for कि 50 in 5 campaign actually है क्या. So even weather services, maybe Norwegian meteorological services, they are using it. So India के केस में भी हम इसको use कर सकते हैं specifically disaster management के context में. Okay, we'll have to, I guess, look for exactly 15-5 campaign है क्या. So the economy of a world without work. So a future where artificial intelligence has eliminated the need for all forms of work is one where AI, it has become self-aware also. Is such a future, अगर ऐसा मतलब future में possibility है, or if this becomes a reality, so how would economic relations be organized?
So basically, we would be seeing reorganization of things economically, and can the current capitalist system जो function कर रहा है in the world, where we don't have to work. So जो हमारा current capitalist system है, मतलब how it can get into sync with these new developments. So उसमें क्या changes हम expect कर सकते हैं with the coming of artificial intelligence. So पूरा उसके context में ये Bletchley declaration we have seen, 28 countries have signed it. So this is in the context of regulation of artificial intelligence, how ethically even the capitalist would be using this technology. That needs to be looked into. And when we talk about the need for the work, so world without work, it may not be probable, but is it desirable or not? So when we talk about India के context में specifically jobless growth, so कहीं ना कहीं it is also indicating towards that only कि क्या artificial intelligence की वजह से number of jobs would get reduced or not. So क्या वो desirable भी है या नहीं? तो एक ये बहुत ज़्यादा important question यही है, उसकी desirability कितनी है? So when we talk about even historically human relations, how they have evolved. So we are having different theories. Two important thinkers in this context is the John Maynard Keynes, जिनको हम JM Keynes भी बोलते हैं, Karl Marx. इनका basically जो debate था, it was more around nature of work and their views around this. So Keynes, he was a liberal thinker who extolled the capitalism, but he wished to save it from its worst excesses. मतलब balance तरीके से ही he supported capitalism. So he believed कि as कि जो work represented it is a form of drudgery, and a world in which the hours of work could be reduced was one that unequivocally increased the welfare. So basically अगर number of hours of work can get reduced, so welfare भी increase हो सकता है. तो यहाँ पे इस context में हमें technology और efficiency को improve करने में help कर सकती है. So that much is acceptable. So जो Keynes से he said कि technological changes जो भी हो रहे हैं under capitalism, they would eventually lead to reduction of working hours. So this was his theory and his argument. And अगर हम Elon Musk sir के जो उनके comments हैं, if we try to link them with his ideas of J.M. Keynes, so we see कि he has said कि improvements in technological change if taken to its theoretical extreme could eliminate the need for work altogether. ये हमने discuss भी किया था कि Elon Musk he said कि the jobs would be completely replaced by AI. So that was another point जो हमने discuss किया था, complete replacement नहीं होगा, उसकी वजह से और jobs भी create हो सकते हैं. Now when we talk about the ideas of Karl Marx, so he had a more nuanced analysis. So he said कि जो essence of basically of humanity lies in our ability to materially manipulate the nature, and work therefore provides meaning to human life also. So इनका थोड़ा और we can say कि और meaningful, और मतलब ये argument ऐसी है जिससे हम थोड़ा और ज़्यादा relate कर सकते हैं कि work provides meaning to your life. So problem arises within the economic system of capitalism also as a product of जो human labor है, it is not the laborers to enjoy, but it is seen as a property of the capital to dispose of in the market for the profit. So ये अगर profit perspective ज़्यादा dominate करेगा, so that also is a problem. So capitalism in his reading he causes basically उनका जो idea था regarding capitalism, he says कि capitalism की वजह से humanity to lose touch with the one activity that provides self fulfillment. तो ये capitalism के context में नहीं fulfill हो पाता है जब हम individual की self fulfillment की जो feeling होती है वो हमें कैपिटलिज्म जिस तरीके से इट फंक्शंस वो नहीं हो पाती है. सो बेसिकली एक नैरो वर्ल्ड हम बोल सकते हैं कैपिटलिज्म को. दैट्स व्हाट ही सेड. सो बाकी तो यही है कि डिजायरेबिलिटी के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं. सो अगर आपको यहाँ पे और कुछ पॉइंट रेज करना है, सो वी कैन डिस्कस दैट. इसमें बोल सकते हैं वर्ल्ड विदाउट वर्क. तो कैसा वर्ल्ड होगा अगर आप 2-3 सब बोले मानसी? नहीं, कैसा वर्ल्ड होगा पहले तो ये बात आएगी ना कि क्या ऐसा वर्ल्ड हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. हो भी सकता है. नहीं अगर ऐसे वर्ल्ड कैसे आप विदाउट वर्क ये तो बहुत वो ही हो हो भी गया, सकता है. एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम बता वाली सकता हूँ चीज हम कैसे. बात कर रहे हैं. नहीं मतलब एक तो मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि और वर्ल्ड यहाँ विदाउट वर्क पे है तो बोल सकते हैं नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है, लेकिन हो भी एक ये सकते हैं भी में कैसा हो चीज है सकता कि है. हाँ, आप वर्क को कैसे डिफाइन करते हो, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है ऑफ वर्क. एक तो पहला एक एरिया हो सकता है पैसिव इनकम, कि आप पैसिव इनकम थ्रू वर्क कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. एंड सेकंड वुड बी द टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री. उसमें
जो सर्विस सेक्टर है वो डिफाइंड एक्स्ट्रा हो सकता है। तीसरा, एआई विल बी एआई विल रिप्लेस ह्यूमन इन द मीनियल वर्क, ऐसे हाँ तो बट सीवेज हाँ मैनेजमेंट कौशिक, या बाकी इसको सब में। लेकिन हम ये तो नहीं तो बोल सकते ना, इट हम्म, विल क्रिएट अ वर्ल्ड विदाउट वर्क, स्टिल ह्यूमंस कहीं ना कहीं ऐसे एस्पेक्ट तो होगा ना, वी हैव टू वर्क इवन इन केस ऑफ पैसिव इनकम भी। ह्यूमन रिसोर्स तो फिर भी चाहिए ना, इनिशियली भी अगर चाहिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बट दैट इज रिक्वायर्ड। कंप्लीटली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हाँ तो मतलब फंक्शन। हाँ, वर्क विल ट्रांसफॉर्म अलॉट। हम्म। Physical work, I think, will reduce with the use of robots and artificial intelligence in long 50 years के बाद फिर सोच कि क्या हो सकता है। हम्म। और इनइक्वालिटी बढ़ेगा क्योंकि मतलब ये जिनका चीज वर्क, है कि हाँ, फॉर्मल सेक्टर में तो वी कैन टॉक अबाउट, बट क्या इनफॉर्मल सेक्टर में भी रिप्लेस कर सकता है एआई? इनफॉर्मल सेक्टर में हाँ कर ही सकता है। कैसे कर क्योंकि सकता अगर फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, है? हम्म। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, तो हम्म। उसमें भी एआई आल्सो कैन ड्रॉ मधुबनी पेंटिंग विद द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग और मिड जर्नी एआई का। लेकिन बात ये है कि अब वो प्रमोट भी कर सकता है ऑनलाइन ई कॉमर्स में एज अ अफोर्डेबल रेट। हम्म। आपको एक मशीन चाहिए, आप सब चीज़ करके आपको दे सकता है। लेकिन जो इंटेंजिबल हेरिटेज है वो उसको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक हाँ। मधुबनी पेंटिंग का जो आर्ट का स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस नहीं होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ट है वो हमेशा रेप्लिकेट होगा एआई के थ्रू। लेकिन न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट जो आएगा या फिर न्यू फॉर्म ऑफ कंटेंट वो नहीं कर सकता एआई। तो हाँ उसी के लिए मतलब ह्यूमन एआई वही इंटरवेंशन है चाहिए। कि कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते, स्टिल वो जो मैनर ऑफ वर्क डन है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें मधुबनी पेंटिंग में जो एक लेयर्स होता है ना, कि एक आर्टिस्ट होती है, एक उसके अंदर में काम करते हैं लोग, तो उसके अंदर हम्म। में जो काम करेंगे ना उनको रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो हम्म। आर्टिस्ट है मेन, जो आप इनोवेट करते हैं, वो रिप्लेस नहीं हो पाएगी। हाँ। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ सकता है, ये डिस्प्लेस होगा या ट्रांसफॉर्म होगा, देखना पड़ेगा। सो ये फैक्चुअल टॉपिक है, इलेक्ट्रिक बैटरी वर्क कैसे करती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ओके, बैटरी। आई कैन टेक अप इन अ वेरी क्विकली हाँ। शॉर्ट मैनर। कि बेसिकली इलेक्ट्रिक वेक्टर कैसे काम करते हैं, उसमें प्लस एंड माइनस होता है, सबको पता है ये चीज़। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इट मूव्स फ्रॉम द माइनस टू प्लस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट मूव्स फ्रॉम द प्लस टू माइनस, अगर आप तार से कनेक्ट करते हो तो। और इट इज हैविंग अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसे दिया हुआ 1780 में ल्यूगी गलबानी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ही से स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली वोल्टैक सेल दे आर हैविंग अ वेरी सीरीज ऑफ रिएक्शन अंदर में। तो बहुत सारे केमिकल होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर और सल्फेट को यूज़ कर सकते हैं, जिंक को यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीज को यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम को यूज़ कर सकते हैं। तो मेजरली कॉपर सल्फेट यूज होता है एंड जिंक सल्फेट यूज होता है, जिसके कारण जो सल्फेट इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है और जिंक इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम माइनस टू प्लस। और बाकी जो रिएक्शन होता है बीच में, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन, रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, उससे फिर करंट जनरेशन होता है और मूव करता है। तो इसमें दो टाइप का होता है सेल, एक रिचार्जेबल होता है और एक अनरिचार्जेबल सेल होता है। तो बेसिकली आप रिचार्जेबल सेल को यूज़ कर सकते हो, जैसे लिथियम आयन सेल होता है, उसको रिचार्ज कर सकते हो बार बार। लेकिन बाकी जो लेड बेस्ड सेल होता है उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो। तो कुछ कुछ इसमें है। कैथोड इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो ये, the redox reaction is very important, and also the electrons moves from the negative to positive, whereas current moves from positive to negative, ये पता होना चाहिए। और सेल तीन चार तरह का होते हैं। एक तो होता है शीट सेल, होता है जो बैटरी में होता है, शीट होता है, एक के ऊपर एक शीट लगा रहता है, उसको रोल किया जाता है, उसके अंदर बैटरी होता है। और दूसरा जो हम लोग ट्रक के सामने देखते हैं, एक बड़ा सा डब्बा रहता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है और बीच में कैथोड डाल रहा होता है। तो वो भी एक तरह का सेल होता है। और बीच में वाटर डाला जाता है ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट हो। तो ये दो टाइप सेल होते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या? बेसिकली द हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्यूल सेल जो है इट यूजेस
the hydrogen जो redox reaction है, and it generates electricity to charge the cell, और सेल से फिर डिस्चार्ज होकर के फिर गाड़ी चलता है। हाइड्रोजन से डायरेक्टली गाड़ी नहीं चलता है। हाइड्रोजन बेसिकली इज अ एनर्जी दैट इज यूज्ड टू चार्ज द सेल, और सेल से फिर आप चला सकते हो। और तो फ्यूल बेसिकली सेल में बेसिकली हमें ईवी क्या? विथ हाइड्रोजन, हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल बोलते हैं। वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल बता सकते हो बेसिकली व्हाट वी नीड एक्चुअली, कौन से एलिमेंट्स हमें चाहिए फॉर वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल? इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्टर चाहिए हाइड्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए। उसका बाय प्रोडक्ट वाटर होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे चार्ज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं फॉर द वर्क पर्पसेस। लाइक ट्रेन्स अगर हम बात करें, सबसे पहले जर्मनी में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन स्टार्ट की गई थी, तो और हाँ, बसेस भी था, ट्रक्स भी है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंडिया का जो लॉन्ग टर्म एम है 5 मिलियन टन नेशनल हाइड्रोजन मिशन में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी को यूज़ करोगे, तो उस पर। ठीक है, ओके, सो विल बी कंटिन्यूइंग इन पार्ट 2, कैन जॉइन अस देयर।